our second webinar on hepatitis. Though Hepatitis Day was on 29 July, but as per our busy schedule, we were not able to celebrate or create awareness on hepatitis on 29th. We are celebrating Hepatitis Day to aware the society today with our 888th webinar of AYUSH SAMRIDDHI, conceptualized by Independent Research Ethics Society, Kolkata. Welcome all. We have today two speakers, one from homeopathy, Dr. Parth Bankar. He is principal, Nutan Homeopathy Medical College, Mehsana, and our beloved Dr. Nishant Shukla ji, Professor Kai Chikitsa in VM Mehta Ayurvedic College, Anandpur. Welcome both of you experts. Now I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for his welcome blessings. So thank you very much, Professor Pawan Sharma ji. And after having a very light-mooded webinar on the roles and responsibilities of son and daughters to their parents and grandparents, and now we are going to shift ourselves from a very academic bound webinar that is based on hepatitis, ways and means for its control, its prevention and control, and of course management. So our two staunch personalities are with us. One from our homeopathy, Dr. Parth Bankar ji. He is from Mehsana. At the same time, our one of our pillars, Professor Nishant Shukla ji, of course, a great person from Jamnagar Institute, Kai Chikitsa Department professor. So he will definitely throw light over this very sensitive subject, because either alcoholic or non-alcoholic or any dietary deficiency, vegetarian, non-vegetarian, whatever, but liver is the same. It doesn't recognize what is veg, what is non-veg. So persons who are being cursed by this problem, and along with some viral infection, how it can be protected, because the liver is said to be the lever of the whole machinery of body. So we are going to listen a lot. With these words, we welcome again to both of our guest speakers, and because we are already running late, so there's no confusion. We will hand over to Professor Pawan Sharma ji for further proceedings. Thank you, sir. Thank you, sir. मैं आशा करता हूँ कि प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी ने माकड़ जी को इनवाइट जरूर किया है. आदरणीय निशांत शुक्ला जी. प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी, are we audible to you? नमस्कार सर. नमस्कार. वो माकड़ जी को बुलाए हैं. माकड़ जी ज्वाइन नहीं हुए हैं. वो नहीं जुड़े अभी. एक सेकंड में अभी बुला लेता हूँ उनको. हाँ, नहीं जुड़े हैं. मैं लैपटॉप से जुड़ रहा हूँ. जुड़ चुका हूँ. मैं उनको बुला लेता हूँ यहाँ से लीव होकर के. सर थोड़ा देखिएगा अग्निहोत्री सर, 5 मिनट. It is already 10:30, so whosoever comes first, he may start his presentation, because we are all eager to listen. Because it's not only one day bound problem. Hepatitis may take place in anybody's body to hit his or her health status by say attacking over it on any day of the year. So we simply it is a aware making day, that is 29th of July, but still whichever day is convenient to us, we are holding this webinar on this very day on this topic. The material is the same, the professor, the author, the presenter, the guest speaker is the same gentleman, so there is no confusion, and he will definitely pay fullest knowledge to us. लिंक नहीं मिली थी, अभी मैंने भेजी है उनको. मैंने लिंक भेजी है उनको. कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं. आप शुरू कर दीजिए जिससे कि आपका समय से हो जाए. तो ठीक है, ओके सर.
उनको ले लेते हैं, है ना, आगे आज जल्दी देर हो रहा है। और ठीक है सर, भी है, we are planning to ठीक है सर। complete it by 10:30, but we are getting late, so please get it start please. Thank you. Yes. Okay, I will make जहाँ तक हो सके मैं जो है ये कंसाइज करने का ट्राई करता हूँ। हाँ नहीं क्योंकि आज प्रोफेसर पवन शर्मा जी निकलना है, भी उनकी फ्लाइट है करीब 11:30 तक। नहीं, वो मैं समझ गया सर जी। मुझे तो कुछ ही बातें करनी है। हाँ नहीं, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है सर। नहीं, मेरे को लग रहा था अपनी वेबिनार इसको मिस कर रहा है, तो इसको होना जरूरी है। आप आ गए तो जो हो जाएगी। जी ओके सर। नमस्कार। सबसे पहले तो इस बार काफी समय के बाद कुछ जो है ये प्रस्तुति लेकर के आया हूं, और आप सभी लोग गुरुजनों से इसकी स्वीकृति भी चाहता हूं। आज थोड़ा जो है ये मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करने जा रहा हूं, एंड दिस वुड बी लिटिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ट्रांसप्लांट के, उसको आयुर्वेद में और इंडिया में किस प्रकार से अलग तरीके से प्रेजेंट करें, और आयुर्वेद को यहाँ पर किस प्रकार से अप्लाई किया जा सके कि जिससे इसकी डिपेंडेंसी को हम कम कर सके। तो मैंने टॉपिक आज का रखा है आयुर्वेद मेडिसिन अफोर्डेबल सब्स्टिट्यूट टू लिवर ट्रांसप्लांट इन केसेस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तो आज हमें ये भी सोचना पड़ेगा, भारत जैसे गरीब देश के लिए जहां पर लिवर ऑर्गन मिलना ये प्रॉब्लम है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, पेशेंट्स को मेडिसिन पर रखा जाता है, खास करके इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर, और उसके बाद उसकी जो है वो प्रोडक्टिविटी की भी जो है ये इश्यू बना रहता है। उनकी लाइफ जो है, वी आर एडिंग ईयर्स टू लाइफ, but we are not adding life to the years. So if there is an alternative कि जहां पर इसको जो है ये मिनिमाइज किया जा सके, उसको डीले कर सके, तो आयुर्वेद में ये एक थोड़ा पोटेंशियल है, और उसको एक्सप्लोर करने का मेरा जो है यहाँ पर एक नम्र प्रयत्न रहा है। Now coming on to viral hepatitis, तो कुछ एक बातें जो है आयुर्वेद के लिए उपयोगी है। मैं काफी सारी बातों पर जो है वो नहीं जा रहा हूँ। There is a systemic infection affecting liver predominantly. So basically this is having a effect on each and every system of the body, and it is affecting liver primarily. The acute hepatitis is caused by one of the 5 viral agents. These are all RNA viruses except hepatitis B, which is a DNA that replicates like retrovirus. So basically the behavior of these viruses are just like RNA virus. When we speak about DNA virus and RNA virus, the RNA virus has got the tendency to change its form very frequently. Whereas in the case of DNA virus, जैसे polio virus है, that is a DNA virus. तो यहाँ पर उसकी जो है वो एंटीजेनिक आइडेंटिटी जो है वो काफी हद तक स्टेबल है, और after the development of the vaccine, the occurrence of the polio has considerably reduced. तो जहां पर ये एंटीजेनिक आइडेंटिटी स्टेबल है, वहां पर तो वैक्सीन से काम जो है ये चल जाता है। जहां पर एंटीजेनिक आइडेंटिटी फ्रीक्वेंटली चेंज होती, वहां पर या तो जो है ये कॉकटेल्स के रूप में उसको जो है ये देना पड़ता है, जहां पर 1 से 2 या मल्टीपल जो है ये जीनोम बेस्ड कॉकटेल बना करके ये देते हैं, बट दैट इज हैविंग अ लिमिटेशन बिकॉज द वायरस कैन चेंज इट्स फॉर्म at any instance. All types of viral hepatitis produce clinically similar illnesses. Either we are speaking of hepatitis A or hepatitis B, C, D, and all its subvariants. तो हेपेटाइटिस ए जो है ये फीकल ओरल रूट से स्प्रेड होते हुए भी इसकी जो क्लिनिकल सीक्वली और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जो चेंजेस बॉडी में जो होती है, होस्ट चेंजेस जो है ये होते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो काफी हद तक जो है ये सिमिलर है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के। ओनली द डिफरेंस इज दैट देयर इज अ इंक्रीज्ड टेंडेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर, हेपेटोसेल्युलर कैंसर। तो ये एक थोड़ा जो है ये अलग है, and that is the important part we are able to play here.
स्थानांतरगतश्चैव विकारान् कुरुते बहुन, ये शुश्रुत का जो है ये वाक्य ये उपयोगी है कि जिस प्रकार से दोषों की गति संचय, प्रकोप और प्रसर से होकर के जहां पर ये स्थान संचय करती है, उस हिसाब से उसका जो है ये रोगोत्पत्ति या फिर रोग के लक्षण जो है ये होंगे। सब क्लिनिकल persistent infection to rapidly progressive chronic liver disease with cirrhosis and even hepatocellular carcinoma, which is more frequently observed in the cases of viral B. These are the graph for the assessment of in the patient's hepatitis HBsAg, HBeAg, NT, HBHBe, and the clinical jaundice. Now, host factor is of the importance in cases of hepatitis. This is from the Harrison textbook of medicine. Under ordinary circumstances, none of the hepatitis virus is known to be directly cytopathic to hepatocytes. ये काफी important जो है ये observation Harrison textbook of medicine में जो है ये author ने जो लिखा है. And cytotoxicity जो है जब तक host defense break नहीं होता तब तक ये effectively liver को damage नहीं कर सकता. HBsAg पॉजिटिव हो फिर भी जो है ये हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा उसमें ये ना हो, ऐसे पॉसिबिलिटीज उसमें बनी रहती है जब तक ये क्लियरली हेपेटाइटिस या फिर सब क्लिनिकल हेपेटाइटिस देखने को नहीं मिलता है. और यहाँ पर जो है ये आयुर्वेद का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है कि हम पूर्व रूप अवस्था में ही अगर हम चिकित्सा करते हैं, लिवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन को यूज करते हैं, पॉजिटिव लाइफस्टाइल को और प्रोमोटिव लाइफस्टाइल को हम अडॉप्ट करते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि होस्ट डिफेंस जो है और टिश्यू डिफेंस और न्यूट्रिशनल प्रिंसिपल टू द लिवर, इसको हम रेगुलेट कर सके. ओनली द थिंग इज दैट वी हैव गॉट द थियरी बट वी डोंट हैव द असेसमेंट क्राइटेरिया कि भाई हम लिवर को जो है उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम इम्प्रूव कर रहे हैं. ये हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है और ये हमें डेवलप करने की जरूरत है. हमें कहीं से अगर ये मिलता है तो दैट वुड बी द बेस फॉर द कंटिन्यूइंग द रिसर्च ऑन liver cirrhosis and preventive aspects in the liver disorder. The evidence suggests that the clinical manifestation and outcomes after acute liver injury is associated with viral hepatitis are determined by immunologic response of the host. So जो मैंने सभी जो यहाँ पर जो मैंने बात की ये पूरा का पूरा जो है ये होस्ट पर है, ना कि वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म पर. तो हमें कहीं ना कहीं बल का जो है ये संदर्भ हमें जो है ये देखना पड़ेगा. जो चरक ने व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक तत्व और व्याधि बल विरोधी तत्व की बात कही है, किस प्रकार से हम व्याधि बल प्रतिबंधक तत्व को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमें जो है ये वर्क करने की जरूरत है. और ये जो है ये बेस बनेगा हमारा SOP का टू प्रिवेंट द लिवर ट्रांसप्लांट और टू avoid the liver transplant as far as possible and improve the quality of life in the patients of hepatitis. तो हमारी challenges क्या है? Different type of mutations emerge during the antiviral therapy. जो conventional antiviral therapy है तो ये they are also the triggering agent for developing the virulent resistant strain against the antiviral substances, antiviral medicines. तो ये कहीं ना कहीं जो है ये antiviral medicines are associated with the developing superbugs, and we need to counteract those with the holistic herbal care. तो Lancet का एक दूसरा ऑब्जर्वेशन है जिसको हमें सोचना पड़ेगा, जो हमारे लिए जो है ये उपयोगी है कि भाई लिवर ट्रांसप्लांट करने पर इसके आउटकम्स क्या होते हैं. तो लिवर ट्रांसप्लांट में ये देखा गया कि आउटकम में अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पेशेंट may develop the acute failure and 80% patient are getting from the death patients, diseased patient
disease patient. So the what happens, the patient the liver is obtained from the person who are getting डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट्स के कारण कहीं पर उनकी डेथ हो गई और उसके कारण ये होते हैं। हेल्दी लिवर जो है ये हेल्दी पर्सन से लिविंग से केवल 20% जो है ये मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हाउ वी आर गेटिंग द लिवर, ये एक रेशियो जो है ये बढ़ता जाता है। पेशेंट जो है वो रिसीवर जो है इसकी संख्या बढ़ती है और अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑर्गन्स इज डिक्रीजिंग। तो हमें थोड़ा जो है ये आयुर्वेद का यूज करके उस पीरियड में जब तक ये ऑर्गन नहीं मिल रहा है तब तक उसकी जो है वो हेल्थ डिटीरियोरेट ना हो, उसको हमें ये देखना पड़ेगा। सेकंड जो है ये लैंसेट का ऑब्जर्व जो पब्लिश हुआ है डेटा, उसमें ये कहा है कि सर्वाइवल रेट ऑफ इन लिवर ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट बियॉन्ड 1 year सिंस ट्रांसप्लांटेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, इन्फेक्शन एंड ग्राफ्ट फेलियर। Approximately 20% of the patients are subjected to graft failure. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है ट्रांसप्लांट का कि हमें आयुर्वेद मेडिसिन को किस प्रकार से हम प्रोपेगेट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। This is one more data on the survival rate and the mortality rate without carcinoma and with carcinoma. तो these are the different सर्वाइवल रेट। यहाँ पर मैंने दोनों जो है ये रिकॉर्ड्स जो है वो साथ में रखे हैं कि देयर इज अ सर्वाइवल रेट इन द फर्स्ट ईयर एंड द सर्वाइवल रेट आफ्टर द 5th year. So why we need to have this one? Wait list and registration for liver transplant is decreasing for the infective when the availability of the medicine is improving. If we are able to offer the Ayurvedic medicine, we can further decrease the need for the transplant in the liver hepatitis. But in case of the chronic liver parenchymal disease, liver cirrhosis, if it is occurring due to the viral hepatitis or hepatocellular carcinoma, the registration and wait list is increasing. Alcoholic fatty disease and non-alcoholic fatty disease are the major cause of the liver parenchymal disease. तो यहाँ पर एक जो है ये माधव निदान का वाक्य में यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा, उसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। यह स्नेह पीतो पिनिवासतो व वांतो विरुक्तो अथवा निरूढ़। तो कहीं ना कहीं जो है ये फॉल्टी डायटेटिक्स, कोल्ड बेवरेजेस को फैटी मटेरियल के साथ, मैदे के साथ लेना, कोल्ड ड्रिंक्स को, कोका को, फैंटा को, ये सैंडविच के साथ, पिज्जा के साथ लेना, और ये कंटिन्यूअसली जब फ्रीक्वेंटली ये होता है और खाने के साथ, स्नेह वाला खाने के साथ या स्नेह पान के बाद अगर शीतल जल जो है ये तुरंत पीता है तो ये मेदस की दुष्टि जो है करके यकृत को विकार करके उदर रोग को उत्पन्न करता है। तो ये दकोदर की स्थिति जो है ये करता है। तो ये अल्टीमेट इफेक्ट जो है ये इसकी देखने को मिलती है। तो there is a urgency for the better Ayurveda alternative. क्यों है? As of 2016, HCV positive organs were more frequently discarded than the HCV negative organ, और ये जो है ये काफी जो है ये बढ़ते जाते हैं। In addition, the number of adults willing to accept the transplant from HCV positive donor is increased nearly to 3-fold. लिवर नहीं मिल रहा है, जो भी लिवर मिल रहा है उसको जो है वो ले लो, तो पेशेंट इज गेटिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम द कैरियर लिवर ऑल्सो। तो ये भी एक बड़ा इश्यू है कि भाई हमें जो है वो आयुर्वेद में ये करना चाहिए। हम आयुर्वेद में किस प्रकार से करेंगे? तो फर्स्ट वन इज द रसायन चिकित्सा। तो रसायन इज द इम्पोर्टेंट वन कि किस प्रकार से हम शमन करके और लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है ये कर सकते हैं। अभ्यास और संस्कार, ये दो जो गुण चरक ने बताए हैं परादी गुणों में, कि संस्कार और अभ्यास कंटिन्यूअसली उसको यूज करके और औषधों को साधित करके, इसकी पोटेंसी को बढ़ा करके, इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा करके केवल जो है वो लिवर फंक्शन और एसोसिएटेड जो है ये बॉडी फंक्शंस को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सके। तो
ये एक जो है ये तरीका हो सकता है कि हम इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। इस पर काफी सारे जो है वो औषधियां हैं जिनको यूज कर सकते हैं। इसकी डिटेल यहाँ पर जो है ये काफी लंबा हो जाएगा प्रेजेंटेशन, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस वन। तो एक इम्पोर्टेंट ड्रग को यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा। त्रिकटु है, योगराज है, कटुकी है, आरोग्यवर्धिनी है, मृतकुमारी है, इनको जो है यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य, समय अवधि कम होने के कारण मैंने अपना जो है वो काफी हद तक इसको मैंने संक्षेप में करना चाहा है। शायद कुछ एक अंश जो है इसके समझ में नहीं आए होंगे। मैंने एक प्रस्तुति करने की यहाँ पर एक नम्र प्रयत्न किया है, एक थॉट जो है ये यहाँ पर मैंने रखने का प्रयत्न किया है। आई एम रिक्वायरिंग दी इनपुट्स कि भाई अगर मुझे यहाँ पर इसका कहीं पर बढ़ना है तो मुझे किस प्रकार से आगे बढ़ना। मैं ऑगस्ट ऑडियंस से यहाँ पर इस विषय में मैं अपनी राय चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे आपने ये अवसर प्रदान किया उसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने अग्रिम वक्ता आदरणीय डॉक्टर माकड़ को सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर पार्थ माकड़ जी शायद आईफोन से जुड़े हुए हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी, नमस्कार and thank you very much for inviting me. This is really something very, very motivating for the Ayush doctors that we are communicating with such an enthusiasm, and the seniors like you are here to listen us and giving us and providing the beautiful platform to share our thoughts and our remedial dimensions in the very challenging diseases of today's time. Thank you very much, Dr. Nishant ji, as well, for getting me connected to this beautiful group of doctors who are communicating in such a scientific and beautiful way. Hope I am audible enough for the further communication. Right? बस कुछ बातें जो है वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा फ्रॉम द होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव। साइंटिफिक डायमेंशन जो है वो डॉक्टर निशांत जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। वैद्यराज ने बहुत ही अच्छे से वो डायमेंशंस को एक्सप्रेस किया है। एंड कमिंग टुवर्ड्स द स्पेसिफिक होम्योपैथिक एफिकेसी ऑफ दिस, एज वी नो दैट इन टुडेज टाइम we are major suffering with 3 different areas. One is, as he mentioned very rightly, the lifestyle origin issues with liver. The other is the area of a viral origin issues with liver. And the third is the autoimmunity based issues with liver. In all these 3 dimensions, there is one common trigger, I would rather, or rather I would say there is one common fuel which actually fires up the liver, and that is the iatrogenicity. That is, kahin na kahin, allopathic dawaiyan, antibiotics, antiviral medicines, in sabka kahin na kahin, jo hamare, khas karke in India, we know it's extremely over-the-counter use is like too high. I'm sure that all of the doctors available here must be seeing a lot of overseas patients or the patients from abroad. तो आप लोगों ने commonly सुना होगा उधर की एक पैरासिटामोल भी अगर चाहिए, it becomes a challenge for them. और अगर किसी को सिफिक्साइम या ज़ीफी जैसी एंटीबायोटिक लेनी है या रेंटेक जैसी एंटासिड लेनी है, तो they need a proper prescription, and then they need a lot of clarities, you know, regarding why they need it. They need a huge amount of test as well, and then and only then, generally,
they get the medicine. But here, patients are just taking out of their own desires, and in some or the other way, because of a lot of this iatrogenic inputs also, the liver is getting more and more vulnerable for the variety of problems it is facing. So I believe that along with this lifestyle-based issues, along with these things, the iatrogenicity is also a parallel factor. A homeopathic dimension has a lot to offer in the liver medicines. Especially, I would share a couple of names where we have seen beautiful results. Like one medicine named as Chelidonium. Again, a medicine, beautiful medicine from Papaveracea family, the opium family. And that carries a medicine named as Chelidonium. And it is one of the finest liver medicine we have. In fact, the liver issues happening because of cholecystitis or the gallbladder stone issues, there also Chelidonium plays a very significant or a very marvelous role. In different potencies, we repeat it in a different way. But yes, Chelidonium is one of the finest weapon homeopathy has for the whole range of the hepatic troubles. The other important medicine here I would sure like to mention is the medicine named as Nux vomica. Especially when a condition comes of a cirrhosis of liver after a long alcoholism, or after a lot of issues of a lot of use of the NSAIDs, like brufen-induced cirrhosis of liver is something which is very common we find. Especially the lot of use of the painkillers generally female do because of their dysmenorrhea, and because of the long-term use of dysmenoric medicines also, many times the hepatic issues are arising. Because for that also, the medicine named as Nux vomica, especially we use it in 30 power. I remember one of the beautiful case where the patient was extremely alcoholic, and he was a clerk in the railway organization. And when he went to hepatologist said that, you know, for how long, he said कि मुझे ये छुट्टियां चाहिए होंगी. So hepatologist smiled and very negatively, in a very harsh way, he answered. He said, बस आप अभी तो 15 दिन की लेके जाओ, मुझे नहीं लगता कि उसके ज्यादा छुट्टियां आपको लेने की जरूरत पड़ेगी. आप अपने आप ही he meant to say you won't be alive anymore just after a few days, after 15 days also. That was his condition. And when he came, he was full of ascites, obviously. A lot of cirrhosis has been developed, fully jaundice expression of the skin, and very worsened condition. It's a very old case. Pardon, I'm not very ready with my, because of certain very typical hectic routines going on, I am unable to show the exact reports, etc. In future, in such meeting, I'll for sure share this thing in terms of report and in terms of exact data as well. But so that was the case, and fortunately, beautifully, this medicine which I named Nux vomica helped him very significantly, and then he lived for 2.5 years only on the Nux vomica after that hepatologist's prescription. So that is a beauty of the medicine Nux vomica. I think Nishanji must have written also some beautiful thing on the comment. Yes, he has written the Agni Kandi Vati that contain Nux vomica, that is there in Ayurveda. Yes, I 100% agree, Nishanji, that that's, you know, that actually the share of the each other's these two Ayush therapies, the share of the materia medica of both of these areas actually can enrich the each other's pathy like anything. I'm very sure about this, because homeopathy uses a lot of plants of Europe and the US based.
because most of the drug provings has happened there in the initial phase of homeopathy, because it originated initially in the Germany. So I can say that, each plant's alkaloid has its own beautiful content, and each continent which carries that plant also has its own fragrance. We can in future someday discuss in this area as well. Anyways, coming back to my liver topic. So this Nux vomica after chelidonium is a beautiful medicine. One more medicine which we use very frequently is prepared from the juice of gallbladder, from the oxus gallbladder, that is named as Feltori. A very interesting medicine, Feltori. And we use it as a, you can say, as a gallstone cutter. Generally, when it comes to renal stone, there are a lot of options we have. But when it comes to gallstone, there are very few options. But Feltori is one of such medicines which is very much useful in any of the hepatobiliary areas. Bryonia is also a medicine which also we use very frequently. Anyways, as the Ayurveda believes, homeopathy also believes that it's all about individualization. So it differs from patient to patient, it differs from person to person. But to sum up my note, I would just say that we should sure educate the patients about, number one, the beautiful efficacy of the homeopathy and Ayurveda in the hepatic troubles, because it carries a magical, miraculous treatment protocols for the liver problems, number one. And number two is that the way we educate them for reducing the addictions for the liver, we also need to educate them for the bad effects of the modern medicines many times, or the unnecessary use of modern medicines and its potential harm it is causing to the liver. So these two things are very, very important. Once again, I'll sum up because it's already a late night, and I'm very, very happy that all of you are here and I've been provided such a beautiful platform to share the ideas and dimensions of homeopathy. On some other day, I'm sure that we'll make sure that we'll share a few more extracts, and we'll be there with few more case examples as well. Thank you very much once again. Thank you very much, Dr. Mankarji. Thank you very much. Thank you, Nishanji, for introducing such a dignitary expert. Excellent. Carbo-veg, one medicine is also carbo-veg. What is the difference between this Nux vomica and carbo-veg? Yes, Nux vomica is a plant medicine, and it is helping more in this alcoholic liver cirrhosis diseases. Carbo-veg is pure carbon, and it is prepared from this charcoal. It's where carbo-veg is prepared from the vegetable charcoal, and carbo animalis is also another medicine which is prepared from the animal origin charcoal. And both of these carbon medicines are more useful when the metabolism goes very low. So it is also equally useful, but there the damage to liver, the metabolic condition is very low in nature. Whereas in Nux vomica, it is because of the hyper use of stimulants. It is because of the over alcoholism. It is over coffee drinkers, over tea drinkers, spicy food eaters. So such lifestyle-based people are getting treated more with the Nux vomica. And those who are having fundamentally the low metabolic rates, they are being given the carbon medicines, that is a carbo-veg or carbo animalis. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Agnihotri, sir. Thank you, sir. Thank you, Professor Now Pankaj. session is open, sir. It's a great pleasure that IRES platform got again a very shining diamond in our say sector. That number of presenters, number of guest speakers are always with us, but a person from homeopathy so promptly, so confidently paying at full attention regarding the liver's related disorders, may it be because of alcohol or any other infective site. You very confidently told all these things and used this Nux vomica's wonderful
remarks and miraculous status. I really appreciate on that example that 2.5 years that person still lived when he was declared almost the last time, say 15 days, having ascites and all that. But still, it's a great pleasure, and we had been having so many times good medicines, especially the Corvivage, where my mother was almost plus 80, and I informed to my homeopath that this Corvivage effect is known by me more than of you. I was so impressed with its effect that it's just life-saving drug, and I came to know that it is made up of simply carbon. It's really wonderful. Meanwhile, Dr. Professor Nishant Shukla, he wrote one thing, that it comes in our sector in Ayurveda as a masi kalpana, but in masi kalpana it becomes in a powdered form, when our homeopathic medicines are always in a liquid form. Liquid is sprinkled over even this glucose, starch pills or simply mother tincture. So the form is different. So, we have to involve honey or any base to get it inside them, while as this is ready-made preparation. But results are very good. So with these words, our second webinar, both the guest speakers has completed their presentation. So the now topic is open, and persons having any idea or any suggestion or any add-on are most welcome. I think since time has gone above, so just to save time, I would like to voluntarily invite if anybody is interested to give some suggestion, add-on, or even a shorter story, because both the persons are here, both the presenters are here. And previous presentation, that was a very lively presentation, that was equipped with the flying kiss and all that. So flying kiss is a very much disturbing point there in Lok Sabha. So that, but Raman Sindhi have put so many times flying kiss. So that made our atmosphere very, very peaceful and very pleasurable. So if at all any suggestion is not here, I think it's time to depart. And for that, our respected Guruji is with us, Professor Lakshmikant Dwivedi ji. हम आपको बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं, कुछ दो वचन आपके भी हो जाएं, जिससे कि आज का कार्यक्रम के समापन हो सके। आदरणीय प्रोफेसर द्विवेदी जी, नमस्कार सर। नमस्कार, शुभ रात्रि सर सभी विद्वानों को। मैंने दोनों वेबिनार सुने। यहाँ तक कर्तव्य की बात है पुत्र या पुत्री की, वो भी काफी अच्छा है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो सीधा है कि साहब हम ईश्वर मान करके ये परस्पर ये कार्य करते हैं कि हमारा ईश्वर बालकों में रहता है, और फिर जब त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो उस भाव से, ये सख्य भाव से ही संभव होता है, परस्पर तालमेल से परिवार अच्छे बनते हैं, इतना ही कहूँगा। और दूसरा, हेपेटाइटिस के बारे में तो मैं ज्यादा विशेषज्ञ हूँ नहीं, जिज्ञासु हूँ, किंतु फिर भी जो चर्चा चली, दोनों विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, तो मेरी मोटी समझ ये है, जितना मैं समझता हूँ, बाकी तो जो वक्ता हैं वो ही क्लियर कर पाएंगे। प्रश्न ये साहब, वो नक्शभूमिका ये लोग कितने दिन देते हैं होम्योपैथी में? नक्शभूमिका से फायदा हुआ, किंतु कितने दिन देने पे हुआ? 2 साल जिंदा रहा, ये बात ठीक है, कोर्स कितना? और हाँ, फिर ये मैं कि हाँ आंसर दूं बीच में से, या आप अभी भी कुछ बात रख रहे हैं? बताइए प्लीज। जी हाँ जी, नक्शभूमिका उनको शुरुआत में पहले 2 महीना जो है वो कंटिन्यूअस दी गई, और उसके बाद में जो है वो करीबन हर 3-4 महीने पे उनको 1-1 सप्ताह तक रिपीट करना पड़ा। जैसे जैसे उनके वापस से कभी कभी सिम्टम या एब्डोमिनल गर्थ बदलती थी, या अगेन उनका नोशिया बढ़ता था और पता चलता था कि नहीं अगेन इनको अभी रिपीटेशन का जरूरत है, तो ही वाज गेटिंग रिपीटेड इन बिटवीन, नॉट द कंटिन्यूअस डोज वाज रिक्वायर्ड। एनीवे, धन्यवाद सर। किंतु फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिक प्रिंसिपल होम्योपैथिक ड्रग बनाने का है, उसकी पोटेंसी और उसकी एफिकेसी, तो मेरे इम्प्रेशन ऐसा है कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे ओपीएम है, तो हम लोग जो काम में लेते हैं तो अतिसार में स्तंभन के लिए लेते हैं, और जब होम्योपैथी में ओपीएम काम में आएगा तो उससे स्तंभन नहीं होगा। इतना मैं मोटे रूप से समझता हूँ। कितना सही हूँ ये आप
तय कर पाएंगे। और Right. इसी तरह से बेसिक प्रिंसिपल अलग होने के कारण से जहाँ कार्बन वाली बात आई, मसीह कल्पना की बात आई, उसमें भी मेरा यही सम्मति है कि साहब नहीं, वो अलग तरीके से काम करेगा, आपका कार्बन देने वाला तरीका अलग है और हम लोग मसीह में सीधा दे रहे हैं, उसका डाइजेशन अलग तरीके से होगा। तो बेसिकली ऊपर से पत्ते हरे दिखे हैं, बहुत अच्छा है, लाभ हो रहा है, सब साथ में ले सकते हैं, किंतु बेसिक प्रिंसिपल अलग होने से न क्रिया संकरो हित, थोड़ा सा इसको सावधानी से ध्यान रखना पड़ेगा। और हम लोग तो नक्शोमिका देते हैं तो 15-20 दिन से ज्यादा नहीं देते, मैक्सिमम 21 दिन देते हैं, 2 महीना भी नहीं। और फिर हम ये मानते हैं कि साहब क्योंकि उसमें डीमेरिट है इसीलिए उसको विष बोला है, अगली बार अगर रेगुलर किया ज्यादा तो डोज बढ़ेगी और एफिकेसी कम होती जाएगी, इसलिए। और अंत में जो है विषाक्तता के लक्षण आएंगे। तो ऐसा ही होम्योपैथी में भी कुछ विचार होंगे, उसकी तरफ आप कुछ बताना चाहें तो। जरूर। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं, देखिए हर एक अगर चीजों को आप बीच में न्यूट्रल हम जब देखें तो उसके 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अब वो जो दोनों पोल हैं, एट द एंड ऑफ द डे, सपोज आप पृथ्वी के साउथ पोल पे जाएं या नॉर्थ पोल पे जाएं, जो जो एक्सपीरियंस ऑफ द एटमॉस्फेयर है विल स्टे द सेम। सो द आइडिया इज इन अ वे, आप जो बता रहे हैं, इट इज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन। जो आपने ओपीएम का भी एग्जांपल दिया, इट्स अ प्राइमरी एक्शन एक है और सेकेंडरी एक्शन दूसरा है। सिमिलरली नक्सोमिका जैसी दवाइयां हैं, जब क्रूड फॉर्म में दी जाती है इन अ वेरी, जैसे कि आपने उसको क्रश करके दिया, आपने उसको सीड के फॉर्म में दिया, उसमें जो लक्षण पैदा होंगे, अब वो ही लक्षण को जब हम डायनेमिक फॉर्म में देते हैं, यानी कि जब हम हायर पोटेंसी में देते हैं, इट ट्रीट्स द सेम विष। सो यही तो फंडामेंटल, एज वी नो द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज समः समम समयति, सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेंटर, और विष है जो ही वो विष को मारता है। तो वी मेक श्योर कि व्हेनेवर वी प्रिस्क्राइब, वी डिसाइड द डोजेज एग्जैक्टली उतना ही जितना विष व्यक्ति के शरीर में है। इन अ वे, मैं सिंबॉलिक विष की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट अ रियल विष। मतलब द अमाउंट ऑफ डिजीज, उसको पाल्पेट करने के बाद उस प्रकार से अगर अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन उस पोटेंसी में, एंड यू आर वेरी राइट जी द्विवेदी सर, दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द डोजेस। और जैसा कि आपने बताया, हम उसको बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ड्रग प्रूविंग। यानी कि एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, कोरोना के वक्त बहुत चला था आर्सेनिक लो, आर्सेनिक लो, आर्सेनिक लो, और कई लोगों ने बहुत ज्यादा आर्सेनिक दे दी, विच इज नॉट एक्चुअली अ वेरी हेल्दी वे टू प्रिस्क्राइब। क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा कोई भी दवाई बार बार शरीर के अंदर जाएगी, तो एज यू सेड वेरी राइटली, वो उसके सिम्टम्स प्रूव करेगी। जो आपने बताया वो ही होगा, यू आर वेरी राइट। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट जो डिजीज की इंटेंसिटी है उसको सही तरीके से पाल्पेट करने के बाद ही उसको अप्रोप्रिएट रिपीटेशन में ही उसको हमेशा दवाई जो है वो दी जाती है। सो आई एग्री इन अ वे द्विवेदी साहब, बात एक ही है। शायद जो टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिकल एंगल से जो एक ही बात को दृष्टिकोण से देखा जाता है, वो दृष्टिकोण शायद अलग अलग थियोरी के हिसाब से या तो डायमेंशंस के हिसाब से देखा जाता है, बट द फंडामेंटल प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, दैट यस, मिनिमम डोजेज शुड बी गिवन, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज only after careful understanding we need to give the prescription। और तीसरा कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन, जैसे सिमिलर सिम्टम्स हैं, आयुर्वेद की कोई दवाई ऐसी है जिसके सिम्टम होम्योपैथी में उसी दवाई का उसी तरीके से उपयोग करना वो सही नहीं है। We always need to understand that how this particular medicinal substance is used or understood by this branch of medicine, और उसकी लाइट में ही उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो देना चाहता है, देना चाहिए। वास्तव में हम लोग जो स्टिक देते हैं तो शोधन करके देते हैं,
और उसमें से एक चीज निकाल देते हैं। और आप जब दवा बनाएंगे तो उसमें शोधन वाली विचारधारा नहीं है, सीधा उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे और एल्कोहल एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद में आप पोटेंसी बनाएंगे, डोज बनाएंगे, वो एक अलग तरीका है। तो एग्जैक्टली वैसा नहीं करेंगे, नहीं तो कार्बन वाली बात में फिर हम अंत में हीरक को भी रिकमेंड कर सकते हैं, विचार सकते हैं, किंतु वो सिस्टम ही बदल जाएगा। मतलब द्विवेदी साहब, rather than Time बहुत हो putting गया। it into a हाँ, गलत तरीका, I would say that वो अलग तरीका है. हाँ, वही It's अलग all तरीका। about, you know, that we have a different ways of looking at the same truth. And the way I see the best part, the fortunate part, the way I see is that जो भी दोनों में से तरीका है, at the end of the day, without harming a patient, without troubling his vitality or her vitality, without hampering their physiology, the medicines help in a positive way and in a far better way than probably the modern medicine does. And that is what I think you are also proud of, and we as a homeopath also proud of that. थैंक यू सर, नमस्कार। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद और शुभ Thank रात्रि। you, thank you, Over sir. to Thank you so Agnihotri, much. Thank This is a great Thank you. discussion with Professor Dwivedi ji and our Dr. Pankaj ji from Parth Pankaj ji from Mehsana. See, we Ayurvedic persons are giving even not only Naxvamika but also strychnine. But our methodology for preparation is entirely different. First we purify and then we use in an internal use manner. So thank you so much, and this is the high time to say goodbye. So सबको नमस्कार, प्रणाम, Thank you. आभार। शुभ रात्रि सभी सर। कल नमस्कार। 8 बजे मिलेंगे धन्यवाद। आयुष फॉर यूथ से। 8 बजे कल रात को अवर स्टैंडर्ड टाइम, आयुष फॉर यूथ।